Good evening, students. Good evening, everyone. My name is Sandeep Khatri, and I welcome each one of you to my special session on current affairs for Bihar APO aspirants. आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं 100 MCQs, most important current affairs for your upcoming Bihar APO Prelims examination. So I hope you all are ready. फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, सेटल डाउन हो जाइए. I am starting this session within a minute. एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए, अब आपका एग्जाम जो है वो 15th को होना है, तो आज आप जितने भी करंट अफेयर सॉल्व करेंगे, अगर आपको उनके आंसर्स पता है दैट इज वेल एंड गुड, फाइन. लेकिन अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं या अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो याद रखिएगा आपको उसका एक वन लाइनर बनाना है. ठीक है, तो उस पूरे क्वेश्चन को एक वन लाइन में अपने नोट्स में ऐड डाउन कर लीजिएगा, ताकि यही सेम मिस्टेक अगर इन केस इससे रिलेटेड या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वहां पर वो मिस्टेक ना हो. ठीक है, चलिए जी. तो आई होप वी आर रेडी फॉर द कमेंट्स. ठीक है, चलिए शुरुआत कर रहे हैं आज के सेशन की विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. सबसे पहला क्वेश्चन, दिस एरिया, यहां पे आपको इंग्लिश में क्वेश्चन नजर आ जाएगा, यहां पे हिंदी में, तो यू कैन इजीली रीड आउट द क्वेश्चन. विच इंडियन प्लेयर वॉन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप. तो पहला ही क्वेश्चन हम स्पोर्ट्स कैटेगरी से स्टार्ट कर रहे हैं. 2025 गोल्ड मेडल. क्वेश्चन आपके सामने है. आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे, प्लीज मेक श्योर कि आप पहले क्वेश्चन नंबर लिखें और उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है इनमें से, उसके बाद उस ऑप्शन को लिखिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में. गुड इवनिंग वैभव. ओके, वैभव का आंसर आ गया है ए, बजरंग पूनिया. आइए चलिए देखते हैं द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर है अमन सहरावत. ठीक है जी, ही इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग रेसलर्स विद गोल्ड मेडल परफॉर्मेंसेस इन इंटरनेशनल इवेंट्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Indian institution developed the indigenous quantum communication network in 2025? चार ऑप्शंस हैं आपके पास, आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ, आईएससी बेंगलुरु या फिर इसरो. Which Indian institution? किस भारतीय संस्थान ने 2025 में स्वदेशी क्वांटम संचार नेटवर्क विकसित किया? बी क्विक, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा आपके पास ड्यूरिंग एग्जाम. डोंट वरी आयुषी, इसका पीडीएफ मिल जाएगा. दृष्टि जुडिशरी के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज DRDO. ठीक है जी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट. देखो ये जो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जब भी आप करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट पता नहीं क्यों बट बिहार जुडिशरी में भी और बिहार एपीओ में भी ये फर्स्ट, हु वाज द फर्स्ट सो एंड सो, तो ये क्वेश्चंस आपके बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आइए आंसर कीजिएगा. फर्स्ट टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस इन मेजर सिटीज इन 2025.
ओके, चलिए आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो दिल्ली में आपने, अगर आप दिल्ली से हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी इलेक्ट्रिक बस जो है आपको नजर आएंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच कंट्री पार्टनर्ड विद इंडिया फॉर द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट? हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी पार्ट को इजीली पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वालों के लिए लेफ्ट हैंड में इंग्लिश में क्वेश्चन है। एग्जाम में भी आपको लगभग इसी तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर वैभव। मनस्वी करेक्ट आंसर दिल्ली। आप जब भी आंसर दें तो पहले क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दें, क्वेश्चन नंबर 4, और उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको लगता है। एंड द करेक्ट आंसर इज सऊदी अरेबिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became the Secretary General of NATO in 2025? जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, चाहे वो नेशनल में हो या इंटरनेशनल, दोज आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। बी इज द करेक्ट आंसर। ही इज द फॉर्मर डच प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, फॉर्मर डच प्राइम मिनिस्टर who became Secretary General of NATO. Next question, which Indian state launched the Green Budget Initiative in 2025? And the correct answer is Kerala. Kerala introduced green budgeting measures to align public expenditure with environmental sustainability goals. Next question, which Indian state launched Raitu Bharosa enhanced financial assistance scheme for farmers in 2025? तो ये जो स्टेट्स वेलफेयर स्कीम्स इनिशिएट करती हैं, वहां से आपका क्वेश्चन है। एंड द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। Next, which Indian organization launched the Pushpak reusable launch vehicle testing program in 2025? आइए देखते हैं करेक्ट आंसर।
बहुत बढ़िया। वैभव, करेक्ट आंसर इसरो कंटिन्यूड सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ द पुष्पक reusable launch vehicle technology. Who became the new Chief Justice of Supreme Court of India in 2025? देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपसे दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब यहां पे 2025 आपसे पूछा गया है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर 51st 52nd ये सब नंबरिंग आपको पता हो। ठीक है, तो यहां पे 2025 पूछा गया है। अगर 2026 क्वेश्चन में आता है, सो द आंसर इज गोइंग टू बी डिफरेंट, क्योंकि जो आज की करंट डेट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दैट इज जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, तो और इसके देखो दो ही तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपसे पूछ लेंगे करंट या आपसे पूछ लेंगे फर्स्ट, इन शॉर्ट की आपसे नाम पूछते हैं, या फिर दूसरी तरीके से क्वेश्चन आता है कि इनका नंबर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन से नंबर के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट announced a separate ministry for artificial intelligence governance in 2025? Artificial intelligence governance. And the correct answer here is Telangana. Which country became India's largest trading partner in 2025? India's largest trading partner. And the correct answer is USA. Which country won the FIFA Women's World Cup 2025? स्पोर्ट्स कैटेगरी से है ये क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर इज स्पेन। विच इंडियन कंपनी बिकेम द फर्स्ट, देखिए यहां पे क्या है फर्स्ट, तो बाय डिफॉल्ट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बिहार एपीओ, फर्स्ट टू लॉन्च एन इंडिजिनियस एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल इन 2025? And the correct answer is C, Reliance Jio. Which Indian athlete won the gold medal in javelin throw at the major international championship in 2025? And the correct answer is B. Okay, correct answer Shipra Vaibhav. Correct answer, that is B, Neeraj Chopra.
Which organization released the Global Risk Report 2026? Global Risk Report 2026. C is the correct answer, World Economic Forum. Which Indian state emerged as the largest producer of renewable energy in 2025? Rajasthan is the correct answer. Which country hosted G7 summit? अब देखो G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है. एंड which country hosted G7 summit 2025? And the correct answer is Canada. It was very much in the news at that point of time. Which Indian state became the first to implement a comprehensive artificial intelligence policy in 2025? देखिए, अगर आपने यूपी एपीओ के लिए भी प्रिपेयर किया है तो आपने सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस ही प्रिपेयर किए होंगे, सो वो एक्सपीरियंस भी आपको यहां पे हेल्प आउट करेगा. एंड द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु. Which country launched the world's first commercial 6G satellite network initiative in 2025? World's first commercial. शिप्रा और बाकी स्टूडेंट से प्लीज रिक्वेस्ट है, आप जब आंसर कर रहे हो तो प्लीज पहले क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए और उसके बाद जो भी आपका ऑप्शन है, सो दैट वी गेट टू नो कि आपने करेक्ट आंसर दिया है या नहीं दिया है. एंड द करेक्ट आंसर इज चाइना. Which Indian city hosted Global AI Summit India 2026? ये भी काफी न्यूज में रहा था, काफी. Hyderabad is the correct answer. Which Indian mission aims to establish country's own space station by 2035? Name of the mission आपसे यहां पे पूछा जा रहा है. देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं भी पता है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन समझ गए हैं तो आप ऑप्शन से भी कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हैं. ठीक है, जैसे आप इसमें ए और डी में कंफ्यूज हो सकते थे, बट क्योंकि भारतीय द टर्म इज
मतलब आजकल हम जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वहां पे भी यूज किया है, तो एक थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। Which Indian state launched the Mission Employment 2025 for Youth Skill Development? And the correct answer is UP, Uttar Pradesh. Which country hosted the World Economic Forum 2026? So World Economic Forum 2026 कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? स्विट्जरलैंड, यूएई, सिंगापुर, जर्मनी। And the correct answer here is Switzerland. Which Indian state launched India's first? देखो जहां भी India's first आएगा तो that is so important. India's first dedicated climate change university in 2025. गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और तमिलनाडु। वैभव, जिन भी क्वेश्चंस में आपको लगता है दैट यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट, तो आप उसमें एक वन लाइनर जो है अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको इस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है तो आप इसका वन लाइनर इस तरीके से बना सकते हैं कि उत्तराखंड लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड क्लाइमेट चेंज यूनिवर्सिटी। दैट्स इट। ठीक है, जितने ज्यादा आप वन लाइनर्स बनाएंगे उतना ज्यादा वो आपको बेनिफिट करेगी। नेक्स्ट, which Indian city became India's first fully AI integrated smart policing city in 2025? सूरत, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे। And the correct answer is Hyderabad. 26. Which among the following is the oldest mountain range in India? इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो स्टैटिक जीके के भी इंक्लूड किए गए। हिमालयास, विंध्यास, अरावलीस, सतपुरास। सुजाता, आपको जिन जिन क्वेश्चंस में डाउट है आप क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए, हम लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेंगे उस पर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज अरावलीज। और अरावलीज जो है अभी आपके करंट अफेयर्स का भी पार्ट था, दैट इज व्हाई वी हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन। ठीक है, डन। सो अरावली वाज इन द न्यूज, जिसपे वो प्रोटेस्ट एंड सो ऑन भी सारा कुछ हुआ था। The Sachi Stupa is associated with, and these are your options: Jainism, Buddhism, Sikhism, Hinduism. तो इस तरीके के स्टैटिक जीके के जो पार्ट के क्वेश्चंस हैं आपके बिहार एपीओ के लिए काफी इंपॉर्टेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज
Buddhism. Who among the following was known as the Grand Old Man of India? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय. And the correct answer is B. Dadabhai Naoroji. Who among the following presided over the Lahore session of Indian National Congress in 1929? Modern history is usually important in comparison to medieval and ancient history. सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपके आते हैं बिहार में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में वो मॉडर्न हिस्ट्री के ज्यादा रहते हैं. जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर. Who among the following founded the slave dynasty in India? ये आपका मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है. B is the correct answer. Qutbuddin Aibak. The permanent settlement was introduced in Bengal in the year 1773, 1793, 1813 or 1833. Correct answer, Vaibhav. And the correct answer here is 1793. बुक्स जो आपकी बुक्स के कैटेगरी को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं या तो वो आपकी कोई करंट बुक हो या फिर आपकी कोई वो फेमस बुक हो इन द हिस्ट्री, वहां से यूजुअली आपके ऑथर्स के नाम आपसे पूछे जाते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक अर्थशास्त्र? काफी फेमस बुक है. ओके, शिप्रा का आंसर आ गया है बी. And the correct answer is B, that is Chanakya. Also known as Kautilya or Vishnugupta. The Battle of Plassey fought in which year? And the correct answer is 1757. Next question. Which among the following movements was started by Jyotiba Phule? देखिए, जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो जिस जिस फ्रीडम फाइटर ने जो जो मूवमेंट स्टार्ट किए हैं वो मूवमेंट किस ईयर में स्टार्ट हुए, उनका पर्पस क्या था, ऑल दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट.
And the correct answer is C, Satyashodhak Samaj. To fight caste discrimination and social inequality. The famous iron pillar is located in Agra, Delhi, Jaipur, Ujjain. And the correct answer is Delhi. अगर आप कभी कुतुब मीनार गए होंगे तो उसके पास में ही ये लोकेटेड है. Who among the following, which among the following temples was built by the Chola dynasty? Sun Temple, Brideshwara Temple, Khajuraho Temple, Dilwara Temple. And the correct answer here is B, Brideshwar Temple. It was constructed by Raja Chola I and is a masterpiece of Dravidian architecture. Who among the following was the court poet of Harshvardhana? And the options are Kalidasa, Ban Bhatt, Vishak Dutt, Bilhad. And here B is the correct answer. He was the court poet of हर्षवर्धन. और इसके अलावा इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, दैट इज हर्ष चरित्र एंड कादम्बरी, हिज फेमस वर्क्स. Who among the following founded the Vijay Angara Empire in 1336 CE? And the correct answer is B, Harihara and Bukka. Which of the following caves is famous for rock-cut Buddhist Chaitya halls? Elephanta caves, Ajanta caves, Udaygiri caves, Barabar caves. Correct answer, Vaibhav. एंड द करेक्ट आंसर इज अजंता केव्स, जो कि महाराष्ट्र में है. एंड दे आर रिनाउंड फॉर बुद्धिस्ट पेंटिंग, मोनेस्ट्रीज एंड चैत्या हॉल्स. द रेयोतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश वाज मेनली एसोसिएटेड विद. ये आपका क्वेश्चन है फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री.
And the correct answer is B. Thomas Munro introduced the Rayotwari system in the Madras Presidency, where revenue was collected directly from cultivators. Who among the following gave the slogan "Do or die" during the Quit India movement? देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी जो अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स ने अपने टाइम में कही हैं। वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। Okay, let's see the answer. Mahatma Gandhi gave the slogan. Correct answer. Vaibhav, Shipra. Mahatma Gandhi gave the slogan "Do or die" during the Quit India movement in 1942. Who among the following translated the Ramayana into Persian during the Mughal period? अब्दुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान और बदायूनी। बदायूनी इज द करेक्ट आंसर। इनका पूरा नाम था अब्दुल कादिर
स्टूडेंट्स, आई होप कि अभी वॉइस का इश्यू रिजॉल्व हो गया होगा। आई होप कि अभी आपको मेरी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। आई होप कि वॉइस का इश्यू रिजॉल्व हो गया है, राइट? आई गेस वी कैन कंटिन्यू नाउ। चलिए जी, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। विच अमंग द फॉलोइंग डांसेस इज एसोसिएटेड विद स्टेट ऑफ केरला? एंड दीज आर योर ऑप्शंस। बिहार जुडिशरी में भी और बिहार एपीओ में भी जो डांसेस से रिलेटेड क्लासिकल फॉर्म्स हैं, वहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू वैभव फॉर द कंफर्मेशन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। And the correct answer is Kathakali is a classical dance drama tradition of Kerala known to elaborate costumes and facial expression. Which among the following Mughal rulers introduced the Mansabdari system? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ये आपका मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि उन्होंने अपने अपने टाइम में कौन कौन से सिस्टम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए थे। And the correct answer is Akbar. Akbar introduced the Mansabdari system to organize military and civil administration. Which among the following Buddhist council was held during the reign of Kanishka? First Buddhist council, second Buddhist council, third Buddhist council, or the fourth Buddhist council. तो ये कितनी काउंसिल्स हुई थी, कहां पर हुई थी, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसमें क्या अचीव किया गया, और क्या क्या उनकी लोकेशंस थी, ऑल दोज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। And the correct answer is fourth Buddhist council was held during the reign of Kanishka in Kashmir. तो ये लोकेशन भी आपको जो है वो पता होनी चाहिए। Which among the following folk dances belongs to Rajasthan? And Ghumar is the correct answer. This is a traditional folk dance of Rajasthan performed mainly by the women. The famous Natraja bronze sculpture belong to which dynasty? आपका ये स्कल्पचर जो है वो न्यूज में भी था, ठीक है? सो दिस इज फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, छोला डायनेस्टी और पल्लवा डायनेस्टी। C is the correct answer. Cholas were famous for bronze sculptures, especially the Nataraja form of Lord Shiva. Which among the following rulers built the city of Fatehpur Sikri? Shahjahan, Humayun, Akbar, Jahangir.
And the correct answer is Akbar. Akbar built Fatehpur Sikri as his capital near Agra. Who among the following founded the Arya Samaj? बहुत बार आपको आर्य समाज के ऑब्जेक्टिव्स पे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं. स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती और एनी बेसेंट. And the correct answer is Swami Dayanand Saraswati founded Arya Samaj in 1875 to promote Vedic principles and social reforms. Which of the following metals is liquid at room temperature? तो ये आपके इंपॉर्टेंट जो साइंस से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं. सोडियम, मरकरी, एल्यूमिनियम, आयरन. And mercury is the only metal that exists in liquid form at room temperature. Which part of the plant is mainly responsible for photosynthesis? Root, stem, leaf or flower? And the correct answer is leaf. The leaf contains chlorophyll, which absorbs sunlight and performs photosynthesis. Which of the following devices converts electrical energy into mechanical energy? Generator, transformer, electric motor or battery? And the correct answer is electric motor that converts electrical injury into mechanical injury using electromagnetic principles. Which of the following acids is present in lemon? Acetic acid, citric acid, formic acid, lactic acid. And the correct answer is citric acid is naturally found in citrus fruits such as lemons and oranges. Which organ in the human body produces insulin? Liver, kidney, pancreas, spleen. ये आपके बायोलॉजी पार्ट से क्वेश्चंस हैं. The pancreas secretes insulin, which regulates blood sugar levels. Which of the following is used as a moderator in nuclear reactors? Uranium, graphite, radium, helium.
Graphite is commonly used as a moderator to slow down neutrons in nuclear reactors. The pH value less than 7 indicates the substance is neutral, acidic, basic, alkaline, salt. And the correct answer is B, acidic. Correct answer by Shipra and Vaibhav. Correct answer. A pH value below 7 indicates acidic nature, while above 7 indicates basic nature. Which vitamin is produced in the human skin in the presence of sunlight? I think ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए. सी अगेन, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे बिहार के, वेदर इट इज जुडिशरी और एपीओ एग्जामिनेशन, तो वहां पर आपको विटामिन रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि आपके बेसिक बायोलॉजी से साइंस वाले पार्ट में फॉल करते हैं. चलिए, इस पर तो ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे. विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट. Which of the following is hardest natural substance? Gold, iron, diamond, platinum. Correct answer, Shipra, Shivam and Vaibhav. Diamond is the hardest naturally occurring substance due to its strong carbon bonding structure. Which part of human brain controls balance and coordination? Biology, basic biology. अगर आपने बायोलॉजी के लिए कोई भी वेदर इट इज लूसेंट और घटना चक्र अगर आपने पढ़ी है, तो ये क्वेश्चंस आप इजीली आंसर कर सकते हैं. C, cerebellum is the correct answer. It controls body balance, posture and coordination of muscles. Which of the following metals is the best conductor of electricity? Correct answer, Shivam, Shipra and Vaibhav. Silver is the best conductor of electricity among all metals. Which of the following waves can travel through vacuum? Basic physics, sound waves, water waves, light waves, seismic waves. Correct answer, Shivam, Vaibhav and Ashutosh. Light waves are electromagnetic waves and do not require a medium for propagation. Which branch of science deals with the study of fossils? Ecology, paleontology, genetics, astronomy. Study of fossils. GK, GS. When it comes to Bihar APO, आपका completely एक separate paper है of 100 marks. That is going to be
are deciding factor, whether it is your prelims or mains of Bihar APO. एंड ऑलमोस्ट सेम सिलेबस आपको बिहार जुडिशरी में भी देखने को मिलेगा जीके जीएस का. B is the correct answer. Paleontology is the branch of science that studies fossils. Which disease is caused by the bite of infected female Anopheles mosquito? इनका नाम भी ना बहुत बार इस मॉस्किटो का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है. Malaria is the correct answer. It is caused by Plasmodium parasite transmitted through infective female Anopheles mosquitoes. Which of the following is the chemical formula of common salt? अब ये वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं, that is from the chemistry part in the science syllabus. साइंस में अगर आप नंबर्स वगैरह जाकर देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यूजुअली बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, देन फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री. अब इसमें आप बहुत कुछ जो है तुक्का नहीं लगा सकते हो. इफ यू नो द आंसर, यू नो द आंसर. सी, कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड विद द केमिकल फॉर्मूला ऑफ NaCl. Which of the following hormones is known as emergency hormone in the human body? Biology. Correct answer, Shivam, Vaibhav, Ashutosh and Shipra. बढ़िया. Adrenaline is the correct answer. This is called as an emergency hormone because it prepares the body to respond to stress or danger. बहुत ही कॉमन आई थिंक एक इंग्लिश प्रोवर्ब भी है, एड्रेनलिन रश. Which of the following lenses is used to correct myopia? Convex lens, concave lens, cylindrical lens, bifocal lens. Okay, let's see the answer. Concave lens is the correct answer. Myopia or short-sightedness is corrected using a concave lens. Which of the following organs purifies blood in the human body? I think इससे easy answer मतलब क्वेश्चन नहीं हो सकता आपके लिए. Heart, liver, kidney, lungs. Basic biology. इस तरह के क्वेश्चंस तो आई थिंक विद इन 10 to 15 सेकेंड्स आपको आंसर कर देने चाहिए. अगर इन केस इफ अ स्टूडेंट फील्स कि उनका बायोलॉजी वाला सेक्शन वीक है तो जितने ऑर्गन्स है ना बॉडी के, ठीक है, अगर आप उनके फंक्शंस भी पढ़ लेते हैं तो आई थिंक एक दो क्वेश्चन तो आपका यहीं से सॉल्व इजीली हो जाएगा. ठीक है, और यू कैन से कि बिगेस्ट मसल कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा है. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी बिहार एपीओ में बहुत आते हैं. सी, किडनी इज द करेक्ट आंसर. किडनी फिल्टर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस फ्लूइड्स फ्रॉम द ब्लड.
Which of the following acids is present in vinegar? Citric acid, oxalic acid, acetic acid, tartaric acid. ओके, ये तो मुझे लग रहा है सभी का ही ठीक है. And C is the correct answer. Vinegar mainly consists acetic acid. Which of the following phenomena explain the blue color of the sky? Reflection, refraction, dispersion, or scattering of light. So basically why the sky is blue, अगर आपको ये क्वेश्चन याद है from your I guess 6th or 7th standard, so you can easily answer this question. The blue color of the sky is due to scattering of sunlight by particles in the atmosphere. Which part of the cell is known as the powerhouse of the cell? Nucleus, ribosome, mitochondria, Golgi body. Correct answer. Shivam, Vaibhav, Shipra. C is the correct answer. Mitochondria produce energy in the form of ATP and are therefore called the powerhouse of the cell. Which of the following scientists gave the laws of motion? Laws of motion. Let's see the options. See the answer. Isaac Newton. Sir Isaac Newton formulated the 3 laws of motion. ठीक है. इवन वो तीनों मोशंस भी आपको जो है याद होने चाहिए, वहां से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है. Which gas is commonly used in electric bulbs? Oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide. आई थिंक 2 ऑप्शंस तो आप इसमें बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हो. 2 ऑप्शंस तो इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे. इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, तो 2 ऑप्शंस तो बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे. C, argon is the correct answer. Argon gas is filled in electric bulbs to prevent oxidation of the tungsten filament. Which of the following elements is essential for the formation of hemoglobin? तो आपकी बॉडी में कौन सा एलिमेंट है जो कि ब्लड बनाता है? Shivam and Vaibhav, correct answer. Iron is essential component of hemoglobin, which carries oxygen in the blood. Which of the following metals is used in making aircraft bodies due to its low density? Copper, aluminium, zinc, lead.
and B, aluminium is the correct answer. It is the lightweight and corrosion resistant, making it suitable for aircraft manufacturing. Which of the following layers of the atmosphere contains the ozone layer? I don't know why, but again, ये जितनी भी आपकी layers हैं और इन layers के meanings क्या हैं, कौन सी layer किसके ऊपर आती है, किसके नीचे आती है, these all questions are equally important. तो वो आपको basic यहां पर इनके बारे में पता होना चाहिए. And the correct answer is C. Stratosphere. The ozone layer is located in the stratosphere and protects Earth from harmful ultraviolet radiations. Which of the following states has the longest coastline in India? ये आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. बहुत बढ़िया शिवम. Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat. And the correct answer is Gujarat has the longest coastline among Indian states. Which of the following mountain ranges separates Europe from Asia? And the correct answer is Ural Mountains are traditionally considered the boundary between Europe and Asia. Which of the following plateaus is rich in black cotton soil? And these are your options. Deccan Plateau, that is the C, is the correct answer. It is widely covered with black soil formed from volcanic basalt rocks. Which of the following rivers forms the famous Marble Rocks near Jabalpur? Again, question from the geography part. Narmada river flows through the Marble Rocks, George, near Jabalpur in MP. Which of the following is largest hot desert in the world? Thar, Sahara, Gobi, Arabian. Geography. Geography. The Sahara Desert in Africa is the largest hot desert in the world. Which of the following planets is known for having prominent rings around it? Mars, Venus, Saturn, Mercury. तो अगर आप इनकी पिक को रिकॉल कर पाए तो यू कैन इजीली आंसर.
Saturn is the correct answer. It is famous for its extensive and visible ring system made of ice and rock particles. Which of the following states has the highest forest cover in terms of area in India? Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh or Maharashtra? And the correct answer is Madhya Pradesh has the largest forest cover in terms of total area in India. Which of the following countries is known as the land of rising sun? China, South Korea, Thailand or Japan? Japan is called the land of rising sun because it lies to the east of the Asian continent. The Tropic of Cancer passes through how many Indian states? Even ये सेम क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है कि कौन कौन सी कंट्रीज से एंड सो ऑन ये पास होती है, और या फिर कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स. यहां पे आपसे टोटल इंडियन स्टेट्स पूछी गई हैं. यूजुअली क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इनमें से कौन सी स्टेट है जहां से पास होती है, कौन सी स्टेट है जहां से पास नहीं होती है. ओके, स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है. करेक्ट आंसर CSMJY. आशुतोष, करेक्ट आंसर. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स. आपको वो 8 इंडियन स्टेट्स के नाम भी पता होने चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? And the correct answer is black soil, which is also known as rigger soil, is ideal for cotton cultivation due to its moisture retaining capacity. Which of the following is the smallest continent by area? तो smallest कौन सा है, largest कौन सा है? बहुत बढ़िया. Mostly students knows this. And the correct answer is Australia is the smallest continent in terms of length. Which of the following rivers originates from Amarkantak Plateau? Godavari, Krishna, Narmada, Tapi. Narmada is the correct answer. The Narmada river originates from Amarkantak Plateau in Madhya Pradesh. Which of the following winds causes rainfall in Tamil Nadu during winter? Southwest monsoon, trade winds, western disturbances, northeast monsoon.
अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस भी ना आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस से लॉजिक लगाएंगे तो एक दो ऑप्शंस तो आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं कि तमिलनाडु है, सो इंडिया के कौन से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में है, और उस तरीके से। So Tamil Nadu receives most of its rainfall during the northeast monsoon season. Which of the following countries shares the longest international border with India? जितने भी इंडिया के बॉर्डर्स के नाम हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कौन सा बॉर्डर है, उसका क्या नाम है बाउंड्री लाइन का, इंडिया एंड चाइना के साथ क्या नाम है, इंडिया एंड नेपाल के बॉर्डर का क्या नाम है, तो ऑल दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। Longest international border. And correct answer, students, Bangladesh shares the longest international border with India. Which of the following dams is built on the Satluj River? And the correct answer is Bhakra Nangal Dam is constructed on Satluj River in Himachal Pradesh and Punjab. Which of the following is an example of an island drainage river? Example of inland drainage river. जल निकासी नदी, गंगा, यमुना, लूनी, ब्रह्मपुत्र. Luni river is the correct answer, that flows into the marshy lands of Rajasthan and does not reach the sea, making it an inland drainage river. Which of the following currents is a warm ocean current? C. Gulf Stream is the correct answer, is a warm ocean current flowing in the Atlantic Ocean. Which of the following mountain peaks is the highest in South India? तो यहां पे आपसे इंडिया का नहीं, साउथ इंडिया का पूछा जा रहा है. And the correct answer is Anayamudi Peak in Kerala is the highest peak in South India. Which one of the following is the highest waterfall in the world? तो देखिए हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, तो अगर ये ऑल ओवर वर्ल्ड का है, इंपॉर्टेंट. आई थिंक ये भी पता ही होगा सबको, काफी फेमस है, द लोकेशन एंड द कंट्री. Angel Falls in Venezuela is the highest waterfall in the world. Which of the following island belongs to the Arabian Sea? Andaman, Nicobar, Lakshadweep, New More.
Okay, so the correct answer here is Lakshadweep Islands are located in the Arabian Sea. Which of the following layers of the earth is composed mainly of nickel and iron? Outer core is the correct answer. Which of the following Indian states is the leading producer of tea? So leading producer of cotton, sugarcane, coffee, ठीक है, tea. Assam is the leading producer of tea in India and is globally famous for Assam tea. Which of the following countries is the largest producer of coffee in the world? Brazil is the largest producer of coffee in the world. Which of the following ports is known as the Queen of Arabian Sea? Chennai Port, Kochi Port, Paradip Port, Kandla Port. And the correct answer is Kochi Port is popularly known as the Queen of Arabian Sea. So students, ये थे आपके most important 100 MCQ questions when it comes to Bihar GK and GS paper. जितना भी current affairs, जितना भी history, geography आप अभी cover up कर सकते हैं during the अभी आपके पास जो 15th को एग्जाम है, कोशिश कीजिएगा you can refer Lucent और घटना चक्र और बहुत ज्यादा डिटेलिंग में ना जाकर जितने भी फैक्ट्स आप रीड कर पाए और जितनों को आप रिकॉल कर पाए, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू. रीजन बीइंग क्योंकि व्हेन इट कम्स टू बिहार एपीओ लॉ से ज्यादा आपका जीके जीएस जो है आपकी परसेंटेज में हेल्प करेगा, क्योंकि लॉ में मोस्टली स्टूडेंट समवेयर अराउंड एक पॉइंट पर ही स्कोर करते हैं, बट जो डिफरेंस क्रिएट करता है दैट इज योर जीके एंड जीएस. नाउ एनीथिंग यू वांट टू आस्क तो आप पूछ सकते हैं. हाँ जी, एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर टू यू, यू आर वेलकम. वैभव, सोनाली. यस, एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर टू यू विच यू वांट टू आस्क. You all are welcome. चलिए, so I wish you all the very best to all of you for your prelims examination. पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए. जल्दी ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. गुड बाय, टेक केयर एंड यस, इट्स टाइम टू से peace.